विद्विषावहै। ओम ॐ शांति शांति शांति। शान्ति हरि हरि ओम। ओम। तो आज भी हम परमार्थ प्रसंग टुवर्ड द गोल सुप्रीम में से ही कुछ पोर्शन लिया है। ये पोर्शन बहुत अच्छे हैं, साधना के संबंध में है, और उसी के ऊपर अभी 2-1 टर्न और लगेगा, उसके बाद हम कुछ दूसरा सब्जेक्ट लेंगे। जी तो आज की समरी करेंगे भुवी ना, हाँ हाँ जी जी भुवन मित्तल। जी ओके, हाँ जी। हाँ करो। Pranam Maharaj. हाँ Um, Pranam to my Guruji and Pranam to Thakur Ma and Swamiji. So today I'm doing the summary from paragraph number 267. So people who seek enjoyment of worldly objects, earning money by illicit means, cannot get lasting happiness and will experience pain, frustration, and anxiety. For one pointed jap and meditation, we must purify our mind by good and noble thoughts, holy company, and good deeds. Only a pure mind can grasp divine thoughts and ideas. Even if mind is lazy, we must do spiritual practices and prayers with perseverance, and gradually we will like doing them. By doing more spiritual practices, we feel God's grace and presence within and how He helps and guides us. Only God can draw our mind towards Him. Intense yearning, renunciation, and God's grace makes us mad with God's love so that we can live in God. Paragraph 270. We must not expect to get a spiritual experience or bliss after doing jap or meditation for a few years. But if we do not get any result after a long time, we must find and fix the defect in our sadhana. Always think that our utmost efforts are insignificant in realizing God unless God Himself, out of His mercy, shows Himself to us. Taking His refuge, we need to implore God to release us from bondage. Persons of steady wisdom, sthit, sthidati, are perfect in meditation. They can draw their mind within themselves at will, remain one pointed in a busy marketplace, and are unaffected by the dualities of pleasure and pain, praise and blame, etc. Paragraph 272. Similarly, people who have reached perfection in jap do spontaneous repetition of the mantra with each breath. A japa jap. Japa continues within while outwardly working. Both perfection in jap and dhyan lead to mukti and results from intense practice, control of mind, spiritual effort, and God's grace. Pranayam is control of the pran or vital breath by breathing rhythmically and gently. It calms the mind if done properly over a long period of time. Then the mind can concentrate on an object and realize, gain full knowledge about it. By pranayam, mind and body become strong, healthy, and a strong willpower is developed. Breathing slowly and deeply and exhaling gently are recommended. Longevity is also associated with slow breathing. If at the start of sadhana, paragraph 276, if at the start of sadhana an aspirant practices making the mind void of anything to hold on to with the aim of achieving nirvikalp samadhi, their brain could become blank or inert and incapable of grasping subtle truths. Paragraph 277. There are 6 conditions for success in yoga as per Shiv Samhita. The first one is firm conviction that I will be successful. Second, spiritual practice with faith and devotion. Third, worship of the Guru. Fourth, tranquility. Fifth, control of the senses. Sixth, moderate eating. Paragraph 278. Controlling the monkey mind is the most difficult
task and can only be accomplished by the grace of God. Spiritual practices with perseverance and reliance on God. Paragraph 279 to 281. Everything is possible, including getting divine experiences with tremendous self confidence and devotion to the Guru. The six lotuses are perceived by the power of yoga. Work is either good, bad, or a mixture of good and bad, based on the presence of sattva, rajas, and tamas gunas. All actions leave their mark on the mind stuff. These impressions or sanskars beget our good or bad tendencies, which become manifest according to circumstances. Paragraph 282. Only work done for others, without the idea of I or for selfish motives, uh, or to gain name and fame, can take us beyond happiness and misery and liberate us from bondage. Such work, seeing God in others, is done in a spirit of service to God. Paragraph 283 to 285. To attain happiness and immortality, we must discriminate between the real and the unreal, or learn from bitter experiences to develop an aversion to worldly objects and thus renounce the objects and the desire of enjoyments. The Karm Yogi offers the fruit of his actions to God, knowing that God alone is the doer. The Raj Yogi knows that Prakriti's purpose is only to serve a man to realize his eternal self, the Atman, and thus he gives up attachment to Prakriti or matter. 285. The Gyan Yogi renounces by following Neti Neti. I am not the body, mind, or senses, and I have no pleasure, pain, birth, or death. I have no bondage or liberation, as I am consciousness, ever pure, ever enlightened, ever free. Shuddh Buddh Mukt Atma. The Bhakti Yogi's renunciation is the easiest of all, as only the tendencies of the mind have to be given a turn. After experiencing misery to uh, from desires, uh, the mind turns away from desires and yearns to realize God, and love and devotion to God fill his heart. Bhakti Yoga is suited to the Kali Yuga. Sri Ramakrishna advised that the Yug Dharma of this age is to harmoniously combine all the four yogas, the Karam, Bhakti, Gyan, and uh, Bhakti Raj Yoga. Yoga. Raj Yoga. हाँ Karm, जी, Bhakti, Jnana and Raj Yoga. Right. हाँ जी. Renunciation is required for all the four yogas, and true bhoga is also possible only with renunciation. We can only practice renunciation of small things, even if it's better to start from where we are. So we can start by renouncing small things according to our capacity. Renunciation is the life of our life. Give away without seeking any return. If you seek any return, whatever we have wastes away. All around nature, we see the sun, moon, trees, stars, flowers giving themselves away freely, but man keeps on saying, mine, mine, even at the point of death. Yogis or men of renunciation do not accept any gifts. Gyanis do not even become attached to their little bodily needs or comforts. But, however, to perform, say, a service to humanitarian work to others, it is totally acceptable to accept gifts. God and God's name are identical. The power of his name is irresistible and infinite. By Jap, we realize God. To get the highest realization, the aspirant should get spiritual instructions from a guru tied to the Guru Parampara. The rigorous spiritual practices of gurus have concentrated the mystic powers of the holy names associated with the deities into seed mantras. Practicing jap with one pointed uh, mind and with faith in Guru will reveal its power, that is, realization of the chosen ideal is gained. Jap leads to aversion to worldly objects, strength and peace of the mind,
and love and devotion to God through His grace. Paragraph 296. Tapasya is of the body, speech, and mind. Eating less and serving diseased people is bodily tap. Speaking the truth is speech tap. Restraint of the senses in practicing dhyan is the tapasya of the mind. Paragraph 297, the last. How do we want God as we do not acutely feel the need of God as we need air to live? We need to become tired of the world first, realize that the world cannot quench our thirst, it's unreal, and that leads us to yearn for God, the everlasting. So, aversion to worldly objects and really wanting God is the first step of religion. So, the very important points that I want to just touch upon are that both perfection and japa or dhyan lead to mukti and result from intense practice, control of mind, spiritual effort, and prayer. And work done for others without the idea of I frees us from bondage. All the four yogas should be combined. That is the Yug Dharma of the age. And to get the highest realization, the aspirant should get initiated by Guru from Guru Shishya Parampara. Yes. Good. In this particular section, yearning has not been discussed too much, isn't it? Yearning is in not this section, it is not there. But yearning is a very important portion of sadhana. Okay? Thank you. Right. You've done a good job. Now we can start with questions. First of all, I had already said Itu Ghosh. Come on. Pranam Maharaj. So you got two times, okay? Yes. And last week's also Last- we'll do. Yes. My first question is this week question that can the mind from the text, can the mind ever tend towards him if he does not draw it? So my question is, it seems that God has to attract the mind. If in spite of some yearning for God, he is late to attract the seeker, how is it possible to maintain patience? Generally, is there any indication for him? No, ऐसा है कि यहाँ कहा है कि if we are attracted towards religion, if you are attracted towards God, if you want to have God, now for that matter I will say, for this reason, if you are joining the Zoom meeting, that also, you know, it is a sort of grace of God. Now, the point is that particularly whatever most important thing is yearning. So yearning, you already told that yearning comes through God. And then you have mentioned about patience. So yearning, after intense yearning, sometimes we don't have patience. The patience also he gives. The point is that yearning and patience both he gives, Lord gives. If you get yearning and then you have to hold on, that is important, and know for certain that it is God who has attracted you and who is holding on to you. Okay. Is that question clear? Yes, yes, yes. Achha. And the second question is, एक मिनट महाराज जी, तो इसका अर्थ ये हुआ कि everything is the grace of God. Everything is grace of God. Grace of God, yes. यानी this is one concept. नहीं, yearning भी हमें grace of God से आएगा. खाना पीना भी भगवान से आ रहा है. ये अभी आज डिस्कशन में और भी ये क्वेश्चन आएगा. आज डिस्कस होएगा ये क्वेश्चन. जी महाराज. महाराज एक प्रश्न है, अर्निंग तो बहुत होती, मतलब ये करे वो करे, पर हम लोग लैग बिहाइंड हो जाते, मतलब सब चीज करने से तब क्या है, डिप्रेशन के समान आता है. हाँ, यही बात उसके है. लिए क्या करने का, मतलब वी वांट टू डू, पर पूरा जैसे कंप्लीट नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है. हाँ, ऐसा ही है. Unfortunately, you know, you have we suppose at the age of, suppose that yearning had come at the age of 25. उस समय क्या होता है कि मन जो है वो डायरेक्ट डिस्ट्रैक्टेड नहीं था.
हाँ हाँ तो उस समय अगर यर्निंग होता तो आप ठीक भगवान के लिए रो भी पाते और होल्ड ऑन कर पाते। अभी तो क्या है, थोड़ा यर्निंग हुआ और उसके बाद सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस आर देयर ऑफ द संसार। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? सब संसार जो है चारों तरफ से खींच रहा है, और इसलिए यर्निंग भी बना नहीं रहता। अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट इज देयर that at is this age of the participants, except for one or two who are young, most are old. And for us, your yearning, even if it comes, it will not remain. Very, very unfortunate. Because there are so many other attractions are there, like duties are there, responsibilities are there, so many things are there. That is why the spiritual yearning does not. व्हाट आई एम थिंकिंग, माय आइडिया है कि ये बहुत स्लो प्रोसेस है। आई थिंक यर्निंग तो पहले से ही हमारा था, पर उतना जैसे प्रोग्रेस होना चाहिए ऐसा नहीं हो रहा, ये प्रॉब्लम आ रहा है। वही तो मैंने कहा ना कि यदि शुरू में हो जाता, शुरू में यर्निंग होता और इंटेंशन से लगे होता तो हो जाता। Now is very difficult. Second question. My second question is from the instruction number 275, and that we find that it is forbidden to breathe out with force. We often breathe out with force. How does it harm us physically as well as spiritually? What harm? क्या बोला? जी वो मतलब टॉपिक है। हाँ, वायु वेग छोड़ना मना है। सांस इतनी ही जोर से छोड़ना चाहिए कि नाक के पास हथेली में रखा हुआ सत्तू जिससे ना उड़ जाए। हाँ। Now the question, what is your question? The question is that we often breathe out with force. How does it harm us physically as well as spiritually? Now don't worry about how does it harm it. Don't worry about it. It is a physiological thing. Oh, doctors will understand. Now don't worry about that. Why are you worrying about it? Don't stop, do it. That's all. Finish. The matter ends there. Okay. Don't ask. It is a purely theoretical question. जी। और मेरा थर्ड प्रश्न है, ये 277 से, according to the Shiva Samhita, the condition of success in yoga, third and fourth conditions are worship of the Guru and equanimity and equanimity. Please explain these two conditions, how to perform these. Now, worship of the Guru. Now, worship the Guru is, Guru Govind दोनों खड़े काके लागू पाए, बरिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए मिलाए। तो ये तो गुरु का इम्पोर्टेंस एवरीवेयर इन द इंडियन कल्चर इट इज गिवन। और गुरु सर्विस ऑफ द गुरु इज whenever service is there, you serve him by practicing what he has suggested. You practice them in your life. Second is, if possible हो तो उनके लिए उनकी सेवा करो। फिजिकल सेवा कर सको तो इट्स ओके। if your guru is there, you offer him pranami, you offer him food, you do dressings, you do physical service, etc. So this physical service is there, and practicing what he has told you into practice. अगर गुरु फिजिकली नहीं है तो? फिजिकली नहीं है तो फिर नहीं कर सकते। उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको वही करना। That is important. That's all. जी। और सेकंड है equanimity. But don't go to extreme. That is all. Be very careful. Samatvam, samadarshitvam, everywhere. Equanimity is a general issue, general value है। तो उसका है कि don't go to extremes. Be in your mind, physical living. Don't eat too much. Don't eat eat too little. Don't overdo activity. Don't become too lenient or too dull. So this is physical. And so far as others are concerned, meeting with people, don't go to extremes in meeting. Then get too much attachment, etc. So these are the things. Equanimity. You have to. This very important value. You have to practice.
ओके ना मेरा वो लास्ट वीक का प्रश्न, हाँ, पहला प्रश्न है अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड्स because they are, this is from the text, because they are too occupied with the continuous enjoyment of the intense pleasure and splendors of heaven. What time is left for them for the practice of discrimination and renunciation? तो मेरा प्रश्न है, gods in heaven can also make mistakes. What about those? Are those added to their sanchit karma? Is there any chance for them to do meritorious deeds? no, why do you understand the gods have gone to the heaven? The question of they अब वो वहां पे वो लोग अपना भोग कर रहे हैं, अच्छे शुभ कर्म किए हैं, and they are enjoying शुभ कर्म in the heaven and hell. New karmas are not produced. New karmas can be produced only in Prithvi. Oh, that is what I wanted to know. मनुष्य जन्म में ही Okay. हम नए कर्म कर सकते हैं, बाकी अच्छा। वहां पर स्वर्ग में जाकर और नरक में जाकर नए कर्म नहीं, वो तो भोग भूमि होती है। अच्छा। पृथ्वी ही है, ये मनुष्य जीवन भी है, वही जो है वो योग भूमि है, कर्म भूमि है, कर्म भूमि है। so that will be done, that's all. ठीक है। अच्छा, सेकंड प्रश्न है, they inspire, this is from the text, they inspire him with the same idea, infuse strength into him, and they also themselves gather fresh impetus from him of like nature. My question is, how one's thoughts get impetus from others' thoughts? Is there any relation in between them? You see, if you sit and go on think of dirty thoughts, what will happen? The dirty thoughts which was in the atmosphere, they will start coming to you. That is what I'm asking. अच्छा. हाँ, यदि आप गंदा विचार करने लग जाओगे तो वातावरण में, मेंटल वातावरण में, मेंटल एटमॉस्फेयर में जो dirty thoughts हैं, they will start coming to you. They will be very happy कि yes, we have got a good receptacle. Yes. But if you go on thinking of noble thoughts, the noble atmosphere or stable atmosphere in the world जो है वो तुम्हारे पर आने लग जाएगा. So always be very careful. Not only by evil thinking you are harming yourself, by evil thinking you are also attracting evil thought. This is a very important thing we must remember. जी, तो ये अगर हम अट्रैक्ट करें नोबल थॉट्स को, तो इससे हमारा वो उन्नति होगा। और नहीं, वो तो उम्र तो होगा ही. That is the practice, spiritual practice तो यही है. Constantly think of noble thoughts. Not only that, all the atmosphere में जो noble thoughts होंगे, mental atmosphere में, वो तुम्हारे पास आएंगे. They will further add to it. ठीक है. अच्छा, और थर्ड प्रश्न है, in reference to the instruction 259, I want to ask whether to pray to God to remove our anger, fickleness, and instability of mind, etc., are also considered as actuated by desire. No. हमारे काम, क्रोध, लोभ को दूर करने के लिए, हमारे साधना में मदद करने के लिए प्रार्थना करना भगवान से, इट इज नॉट सकाम भक्ति. अच्छा. इट इज नॉट सकाम. इट इज गुड. इट इज ए पार्ट ऑफ साधना. It is a prayer. It is a part of sadhana that you pray that Lord remove my ego, yeah, Lord remove my anger, Lord remove my lust, greed. So this is not sakam bhakti. It is a part of sadhana. जी, ठीक है, मेरा हो गया. प्रणाम महाराज. भुवन मित्तल. ऑन करो. महाराज, मेरा पहला क्वेश्चन है ध्यान से संबंधित.
तो ये वर्स 276 में कहा है कि शुरू की साधना में अपने माइंड को वॉइड ऑफ थॉट्स नहीं करना, क्योंकि इससे माइंड इनर्ट हो सकता है और इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग सटल थॉट्स हो सकता है। तो मेरा ये सवाल है कि जब हम हर हफ्ते राजयोग की एक क्लास रहती है थर्सडे को, तो उसमें उसमें ना माता जी हमें जो मेडिटेशन कराते हैं उसमें यही होता है कि मतलब माइंड थोड़ा प्राणायाम, फिर उसके बाद माइंड में से थॉट्स को वॉइड करना है और फिर उसके बाद व्हाट इज द कॉन्शियसनेस दैट इज कॉन्सेंट्रेटिंग, इसके ऊपर सोचना है। Now see, you please follow the instructions of your Diksha Guru. हाँ जी। तो वहां जब वो कहे अवॉइड करने की बात कहो, उसके बदले में वहां अपने दीक्षा गुरु का ने जो इंस्ट्रक्शन दी है, इष्ट का चिंतन करने को दिया है, वो किया करो। हाँ जी। बिकॉज अगर ये माता जी एक प्रकार से इंस्ट्रक्शन देंगे, दूसरे माता जी जो है वो दूसरे प्रकार का होगा। और आपको तो इंटरनेट के अंदर तो बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे। आज सैटरडे को इनका एक गाइडेड मेडिटेशन है, तो मंडे को दूसरे का गाइडेड मेडिटेशन होगा, एंड यू आर गोइंग टू गेट कंफ्यूज। So whatever instructions have been given by the Guru, please hold on. हाँ जी, Hmm. ठीक है जी। Hmm. मेरा दूसरा क्वेश्चन है Hmm. रिगार्डिंग व्हेन जो हम ईश्वर को चाहते हैं, तो ये कैसे पता चलेगा कि हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं? जैसे कि अर्जुन गीता के फर्स्ट चैप्टर में था। हमें ये कैसे मालूम होगा कि अ, अगर हम मान लो जप या ध्यान करना चाहते हैं, तो हम अपने काम से भाग के करना चाह रहे हैं ये या No, फिर you सच्ची तुमने जो इंग्लिश में लिखा है, just read that. ओके। You are confusing. You read whatever you sent or asked me in English. हाँ जी, 1 मिनट। Hmm. How do we know our wanting God is really wanting Him and not escaping from worldly suffering and duties like Arjun was doing in chapter 1 of Gita? ना ऐसा है, गीता में तो कहा there are 4 types of people who worship God. There is what is get told ना, चतुर्विधा हाँ भजन्ते माम, आर्तो अर्थार्थी ज्ञानी और अर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। चार चार प्रकार के लोग मुझे वर्शिप करते हैं, एंड नो वन इज बैड। So most of us, we don't want God. We want something else, but doesn't matter. It is not bad. Suppose we have got body ache and all right, so many diseases are going on. So you can pray, Lord, please help me get over my diseases. There is no harm in it. God, in whichever way you pray to God, is good. But हाँ it is जी। always good when you talk to, pray to God only for Him, only for bhakti, etc. Only. Otherwise, arth means who is suffering. Artharthi, those who want some money, etc. Both of them are also good. Bhagwan says they are sub all are good. Is that हाँ question is पूछे? हाँ जी महाराज, तो मतलब You have कि to find जो out yourself whether you want God or you want something else. That you have to decide. हाँ जी, सो महाराज सकाम भक्ति को निष्काम भक्ति या फिर भगवान से प्रेम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? विचार करना पड़ेगा। विचार करना पड़ेगा कि desires are never been fulfilled. Even though I am asking God for it, I am not asking worldly people, not doing anything in the world for getting my desires fulfilled. But this also I have to get over it. This is not worshipping God. ये This तो is not but I am not asking God. Find out yourself whether you want God or not. That you yourself is. हाँ जी। Kundu,
करो वो करो. Hey, अनम्यूट करो. Undu. अरे unmute, अनम्यूट. unmute. अरे सुनाई नहीं दे रहा है. कुंडू जी अनम्यूट कीजिए, आपका आवाज नहीं आ रहा. अनम्यूट. नहीं सुन नहीं पा रहा. फोन करना पड़ेगा. हम उनको सुन नहीं पा रहे, वो भी सुन नहीं पा रहे. नहीं, वो फोन करना पड़ेगा उनको. मेरे ख्याल में वो कई दफे ईयर प्लग की प्रॉब्लम की वजह से सुन नहीं पाते. कुंडू जी सुनाई नहीं दे रहा. One second. There was some problem. Yes. There was some सुनाई problem. नहीं दे रहा था भाई, तुमने अनम्यूट नहीं हाँ, किया. नहीं महाराज, ये वही कनेक्टिविटी के कुछ प्रॉब्लम था. अभी I have got it back now. Okay. Yes. Questions, Maharaj, I'll come back. हाँ Maharaj, para 272, can you please explain how Japamala helps in doing japa and when it should be used? You see, Japamala is only for counting the number of japa, 108. Mostly Japamalas are 108, or it may be half also, 54. But Japmala is only for counting the japa, number of japa, and that is mostly in the beginning when we are not habituated to japa. So he said, you have done 5 japa mala every morning and 5 in the evening. That is to get into a habit of doing japa. After say few years, what happens is that automatically you will be able to do japa. You need not use the jap mala. So jap mala has only this much, that it is only like it's a help to counting. Second thing, what happens is afterwards you get once you get habit, and then it Japmala becomes a sort of a sanctity. So when the Japmala comes, you feel sanctity, feeling of sanctity, purity, and religion. And so that is why you take Japa Mala. So now I remember I used to do regularly, count used to do 5,000, 10,000 by the means of japa. And now what has happened is I sit for meditation with the japmala and no counting. By taking the japmala in my hand, I get a feeling of sanctity, purity, religion, spirituality. That's all. Okay. So, we were told during Diksha to count it in hands. And we Yes. have learned how to count by hands, and we keep counts of our japa through hand counting only. Yes, yes, yes. So that way Japamala is not required. No, no, But no, when it is only secondary, not at all essential. Okay. But when we read books and all, we find devotees go to Mahatmas and said, Maharaj, Japamala sudh karke dijiye, and they get Japamalas from their gurus or other saints. So that is basically as a secondary help to They are only get secondary into help. the mood. No, that's all. Okay. Maharaj, sometimes japa mala is adding our concentration also. It depends on different types of mind. Because Individual, it all depends upon the individual. the individual, yes. Swamiji, a related question can I ask? Related to this only. Yes. They japa mala, if you use a japa mala, suppose you wear normally a Rudraksh mala, you cannot use the same mala for japa and for wearing, right, on your neck? No, Rudra, that is not a japamala.
Fine, got it. I got it. Only the sanctified one by Guru. No, that is not. No. Even when you wear it, whether it is sanctified or not sanctified, when you are wearing it, is not Japamala. It Fine. is mala, wearing for mala. Mala. Fine. Name is not Japamala then. Fine. Thank you. Huh? Thank you. Yes. Second question. My second question is para 287. Why is the harmony of all four yogas called Yuga Dharma? This is, there in that one passage, number I don't remember, that there it is mentioned by Swami Virajanand that it is Yuga Dharma. Now, because Thakur practiced all four yogas, Swamiji used four yogas, that is why it has become Yuga Dharma. But other also is their definition, Shiv Jnana Jeev Seva is Yuga Dharma. And the yoga is kya hai ki method of synthesis, because for the harmonious development. And the yoga, modern yoga has become so complicated that you cannot become one-sided. Even for survival and for a healthy development of the personality, the combination of four yogas or intellectual development, bhakti, heart development of heart, concentration and activity, all these are important. That is why probably this Yuga Dharma has been used. In the one passage he has written Yuga Dharma, but otherwise I have not come across yoga as Yuga Dharma. Swamiji has only told in the definition, each soul is potentially divine, the goal is to manifest the divinity. So there Swamiji has talked in terms of religion and not Yuga Dharma. Yes. Do this by work or worship or psychic control or philosophy and be free. So that famous definition of Swami Vivekananda of religion. This is the whole of religion. Maharaj, one more thing, this one yoga always overlaps the other yoga. So it is always the combination of four only. It is naturally it comes. No, it depends upon the individual temperament. But bhakti yoga, we have to do concentration also. Gyan yoga also comes. Gyan Mishra Bhakti. So like that, every yoga, different separate compartment is not there. No. Yeah, see, for some people, there are separate compartments. When Swami Vivekananda talks of Jnana Yoga, he only talks of Jnana Yoga. You read your Jnana Yoga, Swami Vivekananda. Yes, Maharaj. And read your Jnana Yoga. Vivek Chudamani, you read, it is Jnana Yoga. Maharaj, Swamiji in Jnana Yoga only he has told that about this compartment. It cannot be separated separately. So this is the overlapping of all four yogas. No. What happens is that individual, depending upon the individual temperament, कर्म तो हम सब लोग करेंगे. कर्म तो करेंगे. अच्छा, भक्ति जो है, जो emotional people है, for them bhakti yoga is superior. A little intellect is there, but no, there are very few people who can go into Aham Brahmasmi by intellect. They cannot do it. So to say that karma both are automatically present there in everyone, it is not correct. Yes, Maharaj. Swami Vivekananda said for modern times, a combination is a better one. Better. Yes, Maharaj. Then para 288. Swami Virajananda said that even bhoga is impossible without renunciation. Can you please elucidate it with some examples? Bhoga and renunciation are poles apart otherwise. अच्छा, ऐसा है. Can you, ये बोलता है, you must elucidate it more than, you will be able to answer it more than me. आप लोग संसार में, हम तो सन्यासी, हम तो we have renounced everything. Where the basis of our renunciation है. And we are having tremendous enjoyment. The bliss which we get, you cannot get it. Now you are in the world. You should be able to tell us
how much of renunciation you have to do for getting a little enjoyment. करेक्ट. सुबह से शाम तक मेहनत करनी पड़ती है, Hmm. जॉब करना पड़ता है लोगों को, जाना पड़ता है, बिजनेस के लिए जाना पड़ता है, वाइफ चिल्ड्रन से दूर जाना पड़ता है, अपने फ्रेंड्स को छोड़ना पड़ता है. You know, whole life is full of renunciation in some form or the other. Remember. That means to get something, you have to leave something. हाँ. Okay. अरे Okay. even for getting, यानी एक बिजनेस मकान बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है देखो तो. Yes, ma'am. और मकान को बना लिया रहने के लिए, तो मुझे मालूम है रहने के लिए मकान बना लिया, उसके बाद में हमारे फादर का ट्रांसफर हो गया, तो उसमें रह भी नहीं सके. ये बहुत कॉमन चीज होती है. Yes. तो संसार में renunciation somehow or the other you will have to do it, even though apparently it appears that we are enjoying. कहाँ enjoyment? कोई enjoyment, थोड़ा सा enjoyment होता है, लेकिन वो 8 घंटे 10 घंटे तो मेहनत करनी पड़ती है ना. जी. और कितनी देर तक अपनी बीबी के साथ सोएगा, सोचो तो. कुछ नहीं है संसार में जो है वो दुख, यानी रिनंसिएशन के सिवाय सुख हो ही नहीं सकता. Yes. Right, madam. Right. Yes, ma'am. Understood. सतीश वेग. प्रणाम महाराज. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पैरा 282 से. Consequently, their work consumes the potential results of all their accumulated action and does not produce further seeds of any action in the form of fresh samskaras in the mind. So, freed from the cause of repeated birth and death, they become fit for the attainment of moksha or liberation after the dissolution of the body. My question is, Nishkam karma, of course, does not produce fresh samskaras in the mind. But what about the stores of samskaras we have accumulated in the previous birth? Do they also perish? No. वो पहले जन्म के संस्कार नहीं, they don't perish, they remain. तो फिर मुक्ति कैसे होती महाराज? वो योग, ज्ञान योग के द्वारा समाधि के बाद होती है. अविद्या it cannot go. जी. तो निष्काम कर्म सिर्फ मन की शुद्धि के लिए ही है, बस कुछ नहीं, और कुछ नहीं. जी. हाँ, और कुछ नहीं होगा. उसके बाद में फिर तुमको और समाधि करनी पड़ेगी, ज्ञान करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी. हाँ, बिना उसके नहीं होगा. जी. अविद्या cannot go. Right. Second question, 283. In renunciation alone is true happiness, having lost all desire for the enjoyment of worldly objects, knowing them to be unsubstantial and ultimately pain-bearing, when after experiencing constant misery, sorrow and despair as a result of being attached to various kinds of worldly objects, a person realizes their unsubstantial, then his attachment to them slips away automatically. His heart and soul yearns to realize God, who is ever true and eternal. महाराज हमारे केस में ऐसा कोई नहीं होता, क्योंकि हमने भी तो ये सब सॉरो डिस्पेयर हम सब एक्सपीरियंस किया है, और हमने भी रियलाइज किया है कि ये इसमें आनंद नहीं है, इसमें परमानेंट वो सुख नहीं है, लेकिन हम भी फिर भी उस संसार में फंसे हुए हैं. ये क्या कारण है इसका? इसका जवाब कुछ नहीं बोलते हैं. वेदांत बोलता है महामाया के चक्कर में फंसे हुए हो. महामाया छोड़ेगी नहीं. माया भगत छोड़ेगी तो अरे संसार महामाया का खेल कैसे चलेगा? तो कैसे छोड़ेगी महाराज, क्या करें? अटैचमेंट इतना डीप रूटेड होता है कि बस जी. थोड़ा सा हुआ, थोड़ा सा चोट लगी, किसी ने चांटा मारा, शाम तक फिर भूल गए. थोड़ा किसी ने गाली दे दी, लगा अरे राम राम कहाँ फंसे हुए हैं संसार में, और दूसरे दिन जैसे थे वैसे के वैसे ही होते. ओनली बिरले और रेयर फ्यू मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये.
मनुष्यों में, हजारों मनुष्यों में कोई एक बार एक प्रयत्न करता है, हम्म, और उन जो प्रयत्न करते हैं उनमें से हजारों में एक आध मुक्त होता है। मतलब लाखों में एक मुक्त होता है बाबा। मन आता ही नहीं है, जाता ही नहीं है वहां पे। बहुत कम लोग जो हैं भगवान के लिए प्रार्थना कर, भगवान को चाहते हैं, कोई नहीं चाहता। ये ब्रह्मेशानंद भी क्या है ना, जूम मीटिंग में उनको मजा आता है, भगवान में मजा नहीं आता। ऐसा नहीं है। महाराज संसार में रह के भी तो Not true. हम जो है उससे अलग अलग में अनुभव कर सकते हैं, उससे अलग। हाँ तो ठीक है, करो ना, हमें ये तो करना है, करना चाहिए। जी महाराज। इतना मीटिंग होता है, सत्संग होता है, उसके बाद मेरे को लगना चाहिए कि संसार से अलग है और संसार में कुछ नहीं है, भगवान के सिवा कुछ नहीं है। ये बात बराबर लगनी चाहिए। व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु हमारे मन को इस संसार से हटाओ। राइट महाराज, राइट महाराज, दिस इज द ओनली वे। यस, ओनली वे। महाराज एक प्रश्न है, वो महामाया और योग माया के डिफरेंट है क्या? ना छोड़ो उसको, आगे कोई बात नहीं, चलो आगे। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज 284। हम्म। The karma yogi dedicates the fruits of his work to God without being attached to it, since he knows that God alone is the door. Maharaj, if God alone is the door, can we dedicate even worthless and unfit karmas such as social activities and physical exercise, etc., which has nothing to do with the good of society? To God? Yes. Whatever you do, you offer to Krishna. कृष्ण अर्पणमस्तु। तुम्हें सिर उठा के झुका कर प्रणाम करो तो इससे सोसाइटी से कुछ लेना देना नहीं है, कोई कृष्ण अर्पणमस्तु। आपके मन में कोई विचार उठाओ, कृष्ण अर्पणमस्तु। एक बड़ी अच्छी कहानी है, वो अपने कौन थे वो, गीता 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 चिंतन क्या है तो उसको यद करोषि यद अस्नासि यद जुहोषि ददासि यद। हाँ, विनोबा जी विनोबा ने कहानी सुनाई है। एक लेडी थी तो जो कुछ झाड़ू लगाती थी तो वो कृष्ण अर्पणमस्तु कर देती और फेंकती थी। और कहानी इस प्रकार की है, उसकी इतनी श्रद्धा थी कि वो जाके और कृष्ण की मूर्ति के ऊपर जाके चिपक जाता था। और रोज पुजारी कहता था कि ये गंदा कचरा कहाँ से आ गया। इतनी उसमें श्रद्धा थी, जो कुछ चढ़ाती थी वो सब कृष्ण को पहुंच जाता था। और उसके बाद में जब मरी, कृष्ण अर्पणमस्तु होके जब मरी तो मूर्ति टूटी। तो एक एग्जाम्पल दिया है कि जो कुछ करो सब भगवान को कृष्ण अर्पणमस्तु मन मस्त करो, उसमें कोई बात नहीं। महाराज जैसे मैं फॉर इंस्टांस कहता हूँ कि कोई हमारे घर में आ गया, मेहमान आ गया, तो हमें आधा घंटा उसको अटेंड करना पड़ेगा, बेकार की बातें भी करनी पड़ेगी। तो ये सब जो सबके सब उसके करो। अंत में जब चले गए वो सबको भगवान को बोलो, प्रभु ये जो किया है मैंने, प्रभु ये सब आप स्वीकार करो। मत भेजो इनको, मत भेजो इनको दूसरी बार। नहीं, भगवान कहेंगे तुम तो इतना मेरे को अर्पण करते हो, मैं तो और भेजूंगा। चलो भाई, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। The enunciation of the bhakti yoga is essential to all. It becomes naturally. Only the tendencies of the mind have to be given a new direction. The course of their current has just to be turned into a new channel. Maharaj, how the tendencies of the mind be turned towards God? Is it so easy? एंगर है, क्रोध है। तो क्रोध, तुम संसार की जितनी चीजें हैं जो भगवान से दूर रह जाती है उनके प्रति क्रोध का भाव रखो। और लोभ है, लोभ करना है तो भगवान से लोभ करो। मोह है तो आसक्ति है, जो भगवान से आसक्त हो। मात्सर्य है, ईर्ष्या है तो भगवान से विपरीत चीजें हैं उनसे ईर्ष्या करो। तो क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये सब चीजें हैं, ये सब भगवान की तरफ किया जा सकता है। ये हमारी नेचुरल टेंडेंसीज है, इमोशंस हैं, इनको सबको भगवान से या भगवान से संबंधित जितनी वस्तु है उनकी तरफ की।
ठीक महाराज, प्रणाम महाराज, हो गए मेरे क्वेश्चन। देवाशीष साहा। क्या देवाशीष साहा इज नॉट रिपोर्टेड? हाँ महाराज जी, रिपोर्टेड। अच्छा, रिपोर्टेड, प्रणाम ओके। प्रणाम महाराज जी। अच्छा अच्छा। काफी क्वेश्चन का तो आंसर जवाब मिल गया। अभी मैं पिछले बार जो क्वेश्चन किया था उसमें मेरा एक डाउट रह गया, मैं एक बार दोबारा करता हूँ महाराज जी। मैं सोचा इसके बारे में, आपने जो आंसर दिया और उसके बारे में सोचा, तो फिर मेरा एक प्रश्न फिर से यह आया कि जब मैं प्रेयर करता हूँ दैट व्हेन गॉड इज वाक्को मनातीत मनोवचन एकाधार, हाउ कैन ही लिसन टू द प्रेयर? आपने बताया था इसीलिए तो अवतार रूप धारण करते हैं। तो मेरा ये है क्वेश्चन है कि व्हेन अवतार लीव्स द वर्ल्ड, हिज Chaitanya gets merged with the Satchidananda, the ocean of consciousness. Now, once he merges into that ocean of consciousness, how can I bring him back and listen, make him listen to my prayer? No, your prayers he will not listen. Huh? His prayers he will not listen. Because you think that he cannot listen. Oh. So you have got the argument. कि भाई after avatar it has disappeared, and now भगवान को जो और ईयर तो है नहीं, वो लिसन नहीं करेंगे, तो आपकी प्रेयर को लिसन नहीं करेगा। लेकिन छोटा बच्चा जो है उसको माँ ने कहा है कि बेटा भगवान को प्रार्थना करो, तो बच्चा प्रार्थना करेगा और भगवान बच्चे की प्रार्थना सुनेंगे, आपकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। Because you are so intelligent, so rational, you think that God does not have ear, how can he listen? Only avatar time listen, otherwise after that he cannot listen. Now, Maharaj ji, इसमें मेरा I am trying to connect another fact that Sri Ramakrishna said that because of the bhakti, he takes the form, the ocean, takes the form of ice, and it brings an image of him. So when that consciousness, that ocean of light, that once you pray, that means he takes the form, and then because of your bhakti, he takes the form and he listens. Is the answer correct? So that's correct. Why are you? There is no question about it. Oh. Forget about it. The bacha, his child, he does not go into all these arguments. Ma says you pray to God and he prays to God. He doesn't bother about whether God is with a form or without form, or whether his ear is there, short ear or big ear is there. He's not bothered about it. We ourselves make a botheration. That's why the problem arises. महाराज जी, इसमें तो स्वामी जी बोले बाप को मनातीत, तो इसीलिए क्वेश्चन आया। For those who are bhaktas, it is not vakt manatit. अच्छा अच्छा। तो ये भी तो कहा है वाक्य मनातीत मन वचन एकाधार। और उसके पहले तो खंडन भव बंधन इतना सब 8 श्लोक कर दिया। उसके बाद एंड में कहा है वाक्य मनातीत। Now you will not bother about the 8 shlokas before, only Vakya Manatit, and you are fighting on it. It is so intellectually to understand that God is all-pervading Paramatma, and he has become Ram Krishna, who is Khandan Bhav-Bandhan. So a person who is Vakya Manatit cannot be Khandan Bhav-Bandhan. ठाकुर जी So ने why ये are भी you बताया confusing? Unfortunately, this is our brain, intellectual, which causes all this problem. ओहो, महाराज वो मनवच न्याय का आधार भी तो है ना? हाँ, मनोवचन एक आधार। वो तो है नहीं, और लोग जो हैं वो वाक्य मनातीत ही लेंगे, मनवे का आधार नहीं लेंगे। नहीं समझते सतीश? जो आर्गुमेंट करने वाले हैं वो कहेंगे कि रामकृष्ण जो है वाक्य मनातीत है, बस, और कुछ नहीं लेंगे। 8 श्लोक पहले के भी नहीं लेंगे और मनवे का आधार नहीं करते। समझ में आया महाराज जी, थैंक यू महाराज जी। नहीं, वो कल फिर वही हो जाएगा। ना अभी समझ आया। और ये ठाकुर जी तो ये भी बताया ने कि भाई एक
चींटी का पैर में अगर नुपुर डाल दोगे तो उसका जो आवाज है वो भी मुझे सुनने में आता है। तो इसीलिए कैसे होगा, कैसे सुन सकता है जब वाक्य मनातीत है? नहीं, काउंटर चीज आते रहते हैं, तो इसीलिए आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे। ठीक है चलो महाराज जी, आगे। ये हो गया। तो अभी अभी जो क्वेश्चन आंसर हुआ इस सिलसिले में काफी चीज क्लियर हो गया। और ये जो हम लोग निर्वाण षटकम पढ़ते हैं, तो ये क्या ज्ञानेज योग या रज योग होता है? जो मनोबुद्धि हंका चित्ता निना हंग नचो सोत्र जीवे वो नचो ज्ञानो नेत्र नचो वो ज्ञान योग स्टेट सिंपल। बट वी आर, अच्छा ठीक है, ओके। And my question, supposing the householder devotee gives एक गिफ्ट का बारे में परिग्रह एंड अपरिग्रह में, my question is that supposing as a householder devotee we accept gifts under unavoidable circumstances and mentally decide that I will first go to the Thakur and tell him and offer him and then give it to the persons poor or the relatively less privileged who need it. Will it beget a sense of obligation and sin of the donor, defiling the body and the mind of the recipient, as it is said in the passage? Who is the donor? Supposing that I have to take it because of unavoidable circumstances, and then I don't accept it. I give it to somebody else who needs it. That's all right. The matter ends there. Oh, thank you, Maharaj. बाकी सब क्वेश्चन हो गया महाराज जी से, बाकी सब क्वेश्चन तो अभी तो हो ही गया। अच्छा, ओके, ठीक। नमस्ते, प्रणाम महाराज जी। अच्छा, अब आएगा शिवानी। Not seen. हाँ जी महाराज, प्रणाम। हाँ भाई। महाराज, मेरा क्वेश्चन था पैराग्राफ 276, इसमें व्हाट आर दीज शास्त्रिक इंस्ट्रक्शंस? इसमें लिखा है ना, दोज हु ट्राई टू एम्प्टी द माइंड ऑफ ऑल इट्स कंटेंट और थॉट राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ देयर साधना विदाउट प्रॉपर शास्त्रिक इंस्ट्रक्शंस, ट्रेनिंग एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, and who think they are practicing to attain the high state of seedless or nirvana kalpa samadhi. तो महाराज ये पूछना था। ऐसा है कि शुरू से ही बैठे ध्यान को, मन को खाली करेंगे, निर्विकल्प समाधि करेंगे। उसके पहले शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान ज्ञान में ज्ञान योग है ना ये जी। उसके बाद में है ना ध्यान समाधि बाद में आता है। शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, उसके बाद में फिर आता है श्रवण मनन निधिध्यासन, बाद में आता है। और वो अचानक बिल्कुल पहले लास्ट स्टेप जो है निधिध्यासन की पहले करना चाहेंगे, और पहले की कोई स्टेप नहीं की तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। राजयोग में यम नियम आसन प्राणायाम ये नहीं किया और धारणा ध्यान करना समाधि करने की कोशिश करेंगे तो आप सफल नहीं होंगे। दैट्स द आइडिया। अच्छा, मींस वन शुड प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप। वही तो इनका है कि पहले एक बोला ना कि जो ऐसा ही करते हैं सीधे बैठ के हम लोग निर्विकल्प समाधि लगा रहे हैं, अरे कुछ नहीं होगा। प्रिलिमिनरी नहीं किया तुमने, ये पहली साधना है, ये तुम जो पूरा प्रश्न किया ये उसकी साधना है। ठीक है महाराज, दैट्स ऑल महाराज। अच्छा, सुबीर मजूमदार। हाँ प्रणाम महाराज जी। मेरे 3 सवाल थे, उनमें से एक का तो जवाब हो गया, कुंडू जी ने पूछा था। पहला सवाल है महाराज जी, इन सेइंग नंबर 283 इट सेज इन रिनंसिएशन अलोन इज ट्रू हैप्पीनेस। प्लीज एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। त्यागे नैके अमृतत्व मानसु, ये है ना श्लोक है उपनिषद में है। न धने न प्रजया त्यागे नेके अमृतत्व। धन में प्रजा में संसार के लोग पैसा चाहते हैं, प्रजा कहते हैं, पुत्र पौत्र संपत्ति चाहते हैं, इनमें अमृत नहीं है। अमृत यानी सुख आनंद और अमरत्व जो है वह त्याग में ही है। त्याग से मन सभी बंधनों से आसक्तियों से मुक्त होता है और अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। हम ये भूल जाते हैं कि जो हमें आनंद मिल रहा है ये हमारे स्वरूप का आनंद है।
एक छोटे बच्चे का दृष्टांत लो। छोटे जी बच्चा रो रहा है, क्यों? उसको भूख लगी है, माँ ने दूध पिला दिया, उसके बाद छोड़ दो, आनंद में है तो जी तो वो तो कहाँ से, क्या पेट भरा हुआ आनंद है? तो क्या पेट भरने से आनंद मिला क्या? नहीं। अरे वो तो स्वरूपतः आनंद है उसका, आत्मा आत्मा का आनंद स्वरूपतः है। और सारी साधना अपने आत्मा के स्वरूप में प्रतिष्ठित होने की है। इसी को भगवान बोल दिया तो भगवान में आनंद हो गया। ये बहुत जी इंपॉर्टेंट बात याद रखिए। न जी अल्पे सुखम, दूसरे उपनिषद में कहते हैं न अल्पे सुखम भूमेव सुखम। जो व्यापक है, पूर्ण है, उसमें सुख है। जो अल्प है, थोड़ा सा धन है, बैंक बैलेंस है, थोड़ा सा खाना बना लिया, उसमें सुख नहीं है। छोटी सी टिटिलेशन ऑफ सेंसेस। संसार के लोग सारे इसके अंदर भूखे रहते हैं और कुछ नहीं है। अल्प के सुख को त्यागना पड़ने का, मुक्ति का आनंद। मुक्ति का आनंद क्या है? कोई बंधन नहीं, एब्सोल्युटली फ्री। राइट राइट। हमें समझ में नहीं आता कि हम कितने बंधन में हैं। हमारे मेंटल डिजायर्स हैं, संसार के ऑब्लिगेशंस हैं, सो मेनी बॉन्डेजेस। और दैट इज व्हाई सन्यासी जो है फिजिकल बॉन्डेज भी खुद छोड़, नॉट ओनली मेंटल, फिजिकल भी। जो गृहस्थ है वो मेंटल बॉन्डेज त्यागे हैं, वो संसार के एक्सटर्नल बॉन्डेजेस नहीं छोड़ सके, लेकिन मन में कोई प्रकार की बात न पाल। बिल्कुल। और फिर बहुत उसमें और भी है, यही है ना, दूसरा है, छोड़ो, उसमें और भी क्या है? अच्छा, और कहे नहीं, अब बहुत सारी कहानियां भी हैं इस प्रकार की। जी यानी वो एक ऐसा ना कि उसमें इंटेंस कंसंट्रेशन। एक कहानी है ना, एक वेश्या से कोई प्रेम करता था, क्या है उसे, बहुत बड़ा संत की जान। वो अपने यहाँ पे श्राद्ध हो रहा था, उसको भी छोड़ के चला गया वेश्या से मिलने के लिए। इंटेंस लव अटैचमेंट था। और जब उसने देखा कि अरे ऐसी सिचुएशन में मेरे से मिलने के लिए सब कुछ छोड़ के आया, तो उसने डांट लगा, कहा कि अरे कैसा मूर्ख है, इतना जब तूने मेरे लिए छोड़ा, अगर भगवान के लिए छोड़ता तो तेरे को कितना मिलता। बिल्लो कौन मंगल कौन था वो? गिरीश गिरीश घोष का लिखा हुआ है, बिल्लो मंगल। बिल्व मंगल, बिल्व मंगल है, वो गिरीश घोष का लिखा हुआ है। हाँ बिल्व मंगल है, बिल्व मंगल है। और भी अजामिल जैसे तुलसीदास का भी तो हाँ यही है। तुलसीदास तुलसीदास का भी है। कितने सारे सब जो थे, इंटेंस अटैचमेंट, उसके बाद सब छोड़ के भगवान में लगाया तो आनंद ही आनंद। तो ये त्यागे नहीं के, त्याग से ही आनंद मिलता है। संसार में भोग में लगे रहो तो यहाँ पे उसमें बंधन ज्यादा होता है, बॉन्डेज ज्यादा है, आसक्ति ज्यादा है। उस आसक्ति के कारण अट्रैक्शन होता है, बांधा हुआ रहता है, मन चंचल बना रहता है। महाराज जी एक छोटा सा सवाल इस सिलसिले में पूछूं। स्वामी जी ने तो कहा है कि जब तक भोग नहीं हो तब तक त्याग नहीं होगा। करिए, फिर करिए। नहीं नहीं, मतलब है कि उनको वाणी क्या लूं या फेंक दूं या क्या? नहीं, देखिए, भोग के साथ विवेक होना चाहिए, नहीं तो सारा जीवन भोग करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। तो महाराज जी भोग का साथ अगर ब्लो आएगा संसार से तभी जाके भगवान का रास्ते में आएंगे। अरे भोग का एक बार लड्डू खा लिया, उसके बाद क्या 100 बार लड्डू खाना है? एक बार विचार करके देख लिया कि ये लड्डू, इसी को लड्डू खाना बोलते हैं। महाराज जी भोग का साथ दुख भी तो आता है ना, मिजरी आता है, सफरिंग्स आता है, तो वो सफरिंग जब आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली भगवान का तरफ चले जाएंगे। नहीं, शॉपिंग के लिए बैठने की जरूरत नहीं, विवेक 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 के बिना नहीं होता सुख। जिसको दुख होता है ना, तो उसको दुख में भी कोई मजा नहीं आ रहा, मजा आ रहा फिर भी नहीं छोड़ता। संसार के लोगों को दुखी दुख होता है ना, फिर भी छोड़ते हैं क्या कोई? Suffering does not always lead because ना ना ना, वो ये विवेक के बिना नहीं होता। हाँ और विवेक होगा तो सफरिंग की जरूरत नहीं है। एक बार थोड़ा सा लड्डू चख लिया, उसका यही तो लड्डू का स्वाद है। ठाकुर ने क्या किया, अपने रसगुल्ला को मुंह में इधर उधर घुमाया और विवेक करके छोड़ दिया। अदरवाइज यू रिमेन वेयर यू आर थ्रू आउट योर लाइफ। अच्छा, भोग की कहानियां है ना, उसमें क्या है, इंटेंस कंसंट्रेशन हो जाता है जहां पे भी है। वो एक अजामिल जैसा लगा या बिल्व मंगल लगा तो इंटेंस कंसंट्रेशन।
And this intense concentration के बिना सुख नहीं होता. But unfortunately संसार के सुख में intense concentration के बाद में intense attachment के कारण intense suffering भी होती है, दुख भी होता है. This is a very important thing. I am glad that ये प्रश्न उठ रहे हैं. इसमें त्याग के द्वारा सुख मिलता है, ये समझ में आई बात के लिए. हुआ सुबीर हुआ? हाँ हमारा बहुत अच्छा बताया आपने. अच्छा ठीक. और दूसरा सवाल था जो ऑलरेडी कुंडू जी ने पूछ लिया था कि even as 4 yogas is impossible without renunciation, so is true of bhoga, और worldly enjoyment is impossible without renunciation. ये तो आपने बता दिया ऑलरेडी, क्योंकि हम लोग सारी जिंदगी कितना काम करते हैं, औरों से दूर रहते हैं, फ्रेंड से, फैमिली से, तब जाके मतलब हर भोग के पीछे कितना रिनंसिएशन भी जुड़ा हुआ है. ये अच्छी तरह समझ में आ गया. महाराज जी ये तो आश्रम में रहने से ऑटोमेटिकली हो जाता है. अच्छा चलो, अब तुम बार बार करने से नहीं काम चलेगा, डिस्कशन करने से इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. ठीक है महाराज. महाराज लास्ट क्वेश्चन है 293 से, which speaks of mantra as received through Guru Parampara. My question is, how do we perceive the power of mantra? Or can we at all perceive it? Mantra, we must try for it. And I don't know what you mean by the power of mantra. You know, वो तो पावर जो मंत्र जो है वो तो उसमें पावर तो है, लेकिन साधना के बिना पावर मैनिफेस्ट नहीं होगा. जी. साधना के लिए you have to make yourself fit also. जी. और उसके बाद स्ट्रगल करना पड़ेगा, then only you will be able to perceive. क्योंकि इसमें कहते हैं if that mantra is constantly practiced through japa with one pointedness of mind, its great power is perceived as a reality. हाँ तो वही तेरे को I said that already written there that you have to do it with concentration. तो ये जो perceive होता है, ये क्या perceive होता है महाराज? As a reality जो बता रहे. Power जो है वो, we are interested in what is power. जी जी. The power of mantra, you know, अब वैसा क्या मतलब, very difficult to say. Power of mantra is when the concentration is there. महाराज स्वामी जी को वो सोने के अक्षर में जल जल करके दिखता था. No, वो तो नहीं. Power of, what is the meaning of power? I can give you. Wait. Power of mantra means, you know, first is by mantra you realize your Ishta Devata. That is the power, mainly power. But if by power you mean worldly prosperity or worldly achievement, मंत्र किया और मेरे को बिजनेस में ये गया, जॉब मिल गया, ये किया, so that is a different thing. Now what is meant here about it, power of mantra, I can't. Maharaj, can it be said that the power of mantra is because you are doing it with so much concentration, the worldly part from you is going away and God is coming closer to you. Your perception of the world becomes weaker and weaker, and God perception of the reality of God becomes stronger. So your that faith is grows. Because of the concentration. That is because of concentration. Why tell you that of power mantra? महाराज मंत्र जब से मन जो कंसंट्रेट हो जाता है, एकदम प्योर हो जाता है, बाकी चीजों से हट जाता है, तो दैट इज आल्सो द पावर. अब ये तो वो तो सभी बात same thing we are talking about. Faith, the development of faith in the. अब वो जो सा भी ले लो, mantra means you know, we have intense concentration, we have got faith. तो already है. These are the preliminary conditions of the fulfillment of mantra. Maharaj, power of mantra can be seen as power of seed. Seed has a power of fructifying, so mantra has a power of fructifying. And fructification means God realization. So वही तो the same thing we are talking about. जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जो हम 10 साल पहले थे, आज वो नहीं है. That is the power of mantra, can we say? Yes. Okay. आप लोग जो भी लेना है इसको ले लो. That's all, Maharaj. Thank you, Maharaj. Pranam, Maharaj.
अच्छा, निवेदिता भक्षी। यस महाराज, पहला जो प्रश्न है वो कैन द माइंड ever tend towards him, means God, if he does not draw it, how far it is true? So sadhana which we are doing is only his wish, and he only provides earnestness for him, and also the renunciation. ये मुझे समझना था जरा, मतलब ऐसा है कि इफ हाँ। यू एक प्रकार से देखो तो सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है। हाँ। तो ये आप मान के चलो, ये उनकी कृपा से नथिंग कैन हैपन विदाउट हिज कृपा। Yes. Renunciation also without his कृपा cannot take place. ठीक। So that इस प्रकार का ले लो उसको, meaning that was what you want to ask. Isn't it? जी महाराज। दूसरा प्रश्न है, हाउ टू फाइंड आउट आवर डिफेक्ट इन अस एंड क्लोज इट। तो मैंने ये आंसर मेरे मन में जो आया वो बता रही कि ओनली प्रेयर कैन हेल्प अस वेदर वी आर गेटिंग एंड रिजल्ट है आनंद या फिर शक्ति इन अस। ऐसा नहीं सकते। What is your question? क्वेश्चन है कि हाउ डू वी फाइंड आउट आवर डिफेक्ट, जैसे साधना कर रहे हैं पर प्रोग्रेस नहीं है, तो एंड दैट इज अ डिफेक्ट इन अस, एंड हाउ टू क्लोज इट, दैट इज द प्रश्न। You see, first carefully, find out the defects is carefully read the instructions of the Guru. अच्छा, ओके। ठीक से पढ़ते नहीं है, पूरा प्रैक्टिस नहीं करते हैं। The method of doing japa, learn the proper method of doing japa from Eternal Companion, Yoga Sutras, etc. Third is investigate within yourself whether there is attachment, there is not or not. These are the methods by which you will be able to find out what are the defects in me. Understand? First is carefully study the instructions of the Guru. Second is read the method of japa, etc. in the books, Eternal Companion, etc. And third, yourself, attachment, you try to find out where is my attachment, etc. Okay? जी महाराज, थैंक यू। उसके बाद प्रश्न है तीसरा, फॉर अजपा जप डू वी हैव टू डू विथ एफर्ट और इट कम्स बाय इटसेल्फ? You see, in the beginning, it is you have to do it with effort. Or afterwards, it should become automatic. Now you are talking at the age of 60 or 70, what is your age? And by this time, it ought to have become a japa. इतना इजी भी तो नहीं है महाराज। क्यों? मैं ये सोच रहा था, तो आज मैं सुबह सुबह उठा तो देखा मेरा जब चल रहा था। मैं ऑटोमेटिकली सुबह उठा तो जब चल रहा था। थोड़ा अपनी तरफ देखा तो थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट किया तो देखा चल रहा था। अरे वाह। नहीं, वो तो सबको हो जाना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं? तुमको भी सबको होना चाहिए, ये तो बोल रहा हूँ। ठीक है। चौथा प्रश्न है, कपाल भाती इज टू एक्सपायर फोर्सिबली। कपाल भाती जो हम लोग करते हैं, तो हम लोग तो काफी दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इज इट एडवाइजेबल टू स्टॉप इट? भाई, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस कपाल भाती बिजनेस। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, कैन आवर कांस्टेंट साधना एंड एफर्ट चेंज आवर संस्कारस? यस, intense sadhana and sanskar, they will automatically change. अच्छा, प्रारब्ध सब खत्म हो जाएगा? सब प्रारब्ध रहेगा, वो तो धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। You are by practice, you are producing new prarabdhas, new sanskaras being prepared. ठीक है। और ये प्रश्न का तो आपने काफी जवाब, मतलब बहुत सारे, एंजॉयमेंट विदाउट रिनंसिएशन इज ऑल सफरिंग, इट्स ओनली कॉन्सिक्वेंस इज मिजरी, ये तो आपने बताया। हो गया। ठीक है, बस इतने प्रश्न। तो रीता है, रीता विश्वाल।
अनम्यूट करो, अनम्यूट। म्यूट हो गए हैं आप। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। Yes, yes. Yes, हाँ, Swamiji. हाँ, Can you hear me, Swamiji? yes, yes. My first question is para 271, page 218. Swamiji says that meditation and japa can be practiced at all times, at all places, and in all conditions. This means mind has to be drawn within oneself. How to draw one's mind within in the midst of all noise and din? Achha. I'll give you 2-3 techniques. Yes. First is a child, a mother has a child of 6 months or 1 year, okay? She is doing everything of the house, you say, okay? Yes, yes. But her mind is also always in the child, isn't it? Yes, Swamiji. So, if you really love God, your mind will always be constantly in mind, God. Yes. Second, habit must be formed by deep meditation in solitude for 2 days, for months, and live. All these great people, they used to do intense spiritual practice before they entered into the world. Yes. Get into a habit of it nicely, and then afterwards you live in the world. Otherwise, by saying, nothing will happen. Yes, Swamiji. At least say once a month, once a week. Yes, Swamiji. For 24 hours, you must just switch off yourself completely. Don't mix with anyone. Unless Yes, you do this side of intense meditation, this habit cannot be built. Every Yes. day you must have at least one day, every day you must at least have 1 day deep meditation. Without that, it is only how to do, nothing will happen. Yes, Swamiji. Yes. I agree to that. My second question is para 288, page 229. You have already answered this question. Even then I'm reading the question. Here Swamiji says, true bhoga or enjoyment of worldly objects impossible without renunciation. Enjoyment without renunciation is all suffering. How can one enjoy if one has renounced? The full purport of this sentence is not clear to me. Kindly explain. You see, we don't understand what is renunciation, what is enjoyment. Enjoyment means peace. When you get everything is satisfied, peace, absolute peace. Yes, Swamiji. And we give importance to the candy you have eaten, to the laddu you have eaten, this is given. No, mind was restless, and by that it became peace, and you get enjoyment. So we don't even understand the meaning of enjoyment. It is absolute peace which you get. This is what Bhoge Roga Bhayam Kule Chut Bhayam Vittendripalat Bhayam Sarvam Vastu Bhayan Vitam Bhuvinidam Vairagya Meva Bhayam. Bhartrihari was full of enjoyment. Then he had such bitter experiences. Yes, yes. Then he just came. That is what he said, Vairagya. Without Vairagya, there is no real enjoyment is possible. Yes, Swamiji. Yes, Swamiji. My third question is number 275, page 221. Why is it forbidden to breathe out with force? While walking fast, the breath comes out with force. That is, it is panting. What should one do? How should one breathe? Well, yeah, ऐसा है कि this pranayam, just one small passage is given in there. 4-5 pages there, say 4-5 sentences is there. I don't know much about it, and I don't know. Can't want to discuss it. Yes. No, but we can breathe normally, Swamiji.
जो slower breath. No, he is talking this. There is only talking of harsh, forceful breathing. This I don't know. Oh, that is forbidden means it's forbidden. Thank you, Swamiji. दिलीप भाई आ जाइए. प्रणाम महाराज जी, प्रणाम जी. महाराज कैन आई शेयर? आपको इतनी देर तक वेट करने दिया आपको. लास्ट टाइम आपको पहले लिया था, आपको आखिरी में दिया. महाराज जी कैन आई शेयर समथिंग बिफोर यू स्टार्ट विद दिलीप भाई? देखो जल्दी से करो. हाँ, सिर्फ शेयर कर रहा हूँ. ये दीपक चोपड़ा, डॉक्टर दीपक चोपड़ा जो है, आपने सुना हुआ है. तो he has exactly said the same thing which Swami Virajananda said here, कि the faster we breathe the lesser the आयु. And he has said the same thing कि जितनी फास्ट ब्रीदिंग होती है उतनी आयु कम होती है. तो साइंटिफिकली भी उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है. मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था. It is not faster. It is forcibly. नहीं, फास्टर ऑल्सो. तो जिसका रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा है, रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा है, उसकी आयु उतनी कम है. फॉर एग्जांपल, वो तो साइंटिफिक है. That is what I'm saying. No, you see, in this article itself, there is a list of list given. जी महाराज, मैं already given. Why are you unnecessarily wasting the time? नहीं, मैं कह रहा हूँ साइंटिफिकली भी ये प्रूव हो गया. अरे भाई, एलिफेंट का इतना है, वो तो इतने साल जीता है. वो खरगोश का इतने साल जीता है. ऐसा बोलते हैं. जी. हाँ महाराज जी, प्रणाम. हाँ, मेरा पहला सवाल है पैराग्राफ 269 पेज 216. महाराज जी, हाउ वी नो दैट गॉड इज प्रोवाइडिंग व्हाट आई नीड, व्हाट आई वांट, एंड गॉड डू नॉट प्रोवाइड, then what should I think? Is it not good for me? That is why God has not provided to me. If we understand that in that way, then question arises, we will stop trying hard in achieving things good. Example, students fails in exam, then should he stop studying thinking it's a God will, or trying again with more vigorously? अच्छा. हम देखो, ये दिलीप भाई, हम यहाँ पे जूम मीटिंग में मिल रहे हैं जी. तो ये गॉड्स विल हुई ना? हाँ, एग्जैक्टली. अब इसमें आप क्वेश्चन कर रहे हो, ये भी गॉड विल है. हाँ, ये भी गॉड्स विल हुई ना? जी. हम साधु बन गए. हाँ, ये भी गॉड. अब उसके बाद हम कुछ ने बहुत सारी चीजें कर रहे हैं. हाँ. जूम मीटिंग कर रहे हैं, तो हर बार तो गॉड हमको विल नहीं कर रहा है. हमेशा भगवान तो मेरे को प्रेरणा नहीं कर रहा है. हम कैसे मालूम? मेरे को तो बताते नहीं है भगवान कि तुम ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, वैसा करो. महाराज जी, एक मिनट डिस्टर्ब कर. तो we think every action of our life is a God's willing. ये भी हमें सोच के रखा है हमने. पारमार्थिक दृष्टि से, हाईएस्ट भक्ति की दृष्टि से, तुम एक चीज, आंख की पकड़ी भी नीचे भगवान की इच्छा के बिना नहीं कर सकते. बराबर जी. ये है. अब आप उसी को भी ले लो. अब वो स्टूडेंट की बात कर रहे हो जी. हाँ, यस. हाँ, तो वो स्टूडेंट भी जो है, वो परमार्थिक दृष्टि से तो भगवान ही सब कर रहा है. उससे पढ़ाई करवा रहा है, फेल करवा रहा है, पास करवा रहा है, सब करवा रहा है. अच्छा. और जो संत होते हैं ना, हाँ, नहीं, बंद हो गया महाराज. म्यूट हो गए आप. म्यूट हो गए. बंद हो गया हमारा. महाराज, we can't hear you also and see you also. वो दोनों ऑफ हो गया. It's on. महाराज का माइक हट गया. जी महाराज. हाँ जी महाराज जी. तो जो संत होते हैं, वो पावर लगता है कि भगवान ही कर रहे हैं. वो उनको लगा, तो भगवान बताते हैं ये करो, वो करो जी.
समझे? हाँ बराबर, यानी संत के द्वारा किए गए हर एक्शन इज गाइडेड बाय गॉड। नहीं, वो एक्चुअली फील सबका। करते हैं। जी यानी भक्ति की दृष्टि से तो जो कुछ हो रहा है सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, भगवान ही कर रहे हैं। जी लेकिन संत जो है वो एक्चुअल अनुभव करते हैं कि ये मेरा हाथ हिल रहा है, ये भगवान ने हिला रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जी। देखो ऐसा है, अब श्री रामकृष्ण जो है वो हाँ कुछ हो गया, उसके बाद में उन्होंने उसके बाद में कुछ उनको तकलीफ हो गई, तो हाँ माँ जगदम्बा से कहते हैं, माँ माँ गलती हो गई मेरे से, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। हाँ तो वो तो पूर्ण रूप से माँ जगदम्बा पे पूर्ण रूप से समर्पित थे, जी फिर भी उन्होंने इस प्रकार का किया। समझे ना? जी तो ये जो है ये इतना आसान नहीं है। उच्चतम स्थिति से फिलोसॉफिकली दृष्टि से भगवान कर रहे हैं, यस लेकिन अनुभव करना जो है हाँ वो भिन्न है। जो हाँ 100% डिपेंडेंट होगा तो हाँ भगवान खाना भी उसे खिलाएंगे। जी हाँ राइट। तो अच्छा महाराज जी, बहुत बार ये होता है कि हम भी ये रियलाइज करते हैं कि जब कुछ हमसे गलती हो जाती है या नुकसान हो जाता है, देन वी गो टू गॉड और वी प्रे गॉड कि ये हमारे से गलती हो गई थी, हाँ हाँ, और माफ कर देना। हाँ। तो दिस इज ये गॉड इंस्टिंक्ट हम में आ जाती है क्या, जिस समय हम ये ईश्वर के पास जाके हमारी अरे छोड़ो, भगवान हमने एक कोने में रख लिया है, जब इच्छा होती है तब उसके पास चले जाते हैं, तभी बोलते हैं भगवान तुम्हारी गलती हो गई है। अच्छा काम होता है तब में बोलते हैं कि भगवान तुमसे अच्छा काम किया। ये सब छोड़ो, कोई भक्ति भक्ति तो है नहीं, सब जो चल रहा है वैसे चलता रहता है, और क्या क्या तुम। महाराज जी, मेरा दूसरा सवाल है, as this para says, job should be done at all places, in all time and in all condition। वो सवाल हो चुका था, पर यहाँ मेरा क्वेश्चन ये, then will it not be a mechanical job and nothing to do spirituality? अच्छा अच्छा अच्छा, तुमको बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया। एक है मैकेनिकल साधना और दूसरी है कॉन्शियस साधना। जी एक है जिसे बोलते हैं सबकॉन्शियस साधना, जी जैसे गले में माला पहन ली, हाँ गेरुआ पहन लिया, यस मैंने अपने कमरे को फोटो से सजा लिया है, तो घर में अब बैठा हुआ हूँ तो फोटो को हमेशा तो देख नहीं रहा हूँ, जी लेकिन उसका प्रभाव पड़ रहा है। यस गले में माला पहनी, उसका प्रभाव तो पड़ रहा है। तो हाँ गेरुआ मैंने पहना है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड पे प्रभाव तो पड़ रहा है। जी ये सब हुआ मैकेनिकल। जी अच्छा, लेकिन जब कंसंट्रेशन होके करेंगे तो चीज दूसरी होगी, समझ में आ जाएगा तुमको। अच्छा, दूसरा दृष्टांत ले लो। तुम बोलते हैं ना कि जप करने के बाद जब जब राम 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 करें, मैकेनिकल करें, उससे क्या होगा, ये तो मैकेनिकल होगी। तो एक आदमी तो अच्छा उन्होंने एग्जाम्पल दिया है संत ने, उन्होंने प्रभानंद जी ने यह किताब में बताया है कि भगवान के नाम के बदले तुम रुपया रुपया करो ना, रुपया 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 करो, बस रोज करो, 10,000 रुपया रुपया का जप करो। अब 5 महीने बाद में रुपया आने लग जाएगा, अब ब्लैक मार्केट का रुपया भी आने लग जाएगा, और इनकम टैक्स वाले आने भी लग जाएंगे, चोर भी आने लग जाएंगे, रुपये के साथ जो सब बातें हैं वो सब आने लग जाएगी। तुमने तो मैकेनिकल कर रहे हो ना। महाराज जी, भूत भूत करने से भूत भी आ जाता है। अरे अच्छा महाराज जी, हाँ ये आपने एग्जाम्पल दिया, तो उससे एक बड़ा अच्छा ये फीलिंग मुझे आ रही है कि मैकेनिकल जब करने पे भी हमें फायदा मिल नहीं है, यदि वही तो, हाँ जरूर मिलेगा। राइट जी यानी जी जो मैंने कहा ना कि वो सबकॉन्शियस में इफेक्ट हुआ है। हाँ गेरुआ पहनने से, गले में माला पहनने से, कमरे में किताबें लगाने से, कमरे में फोटो इत्यादि लगाने से उसका सबकॉन्शियस माइंड में इफेक्ट करता है।
साधना दो लेवल पे होती है, सबकॉन्शियस लेवल पे होती है और कॉन्शियस लेवल पे होती है। एक मैकेनिकल साधना होती है और दूसरी कॉन्शियस साधना होती है। जी और ये कॉन्शियस साधना का अर्थ है कि जब हम एकाग्र मन से भगवान का चिंतन करेंगे, एकाग्र मन से जप करेंगे, तो ये कॉन्शियस लेवल का हुआ। अभी आप कॉन्शियस लेवल पे बातचीत कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। राइट। एक स्वाध्याय करिए, किताब में लिखिए, किताब में से एक किताब में से पैसेज निकाल के दूसरी किताब में पैसेज लिखिए, ये सब हो गया कॉन्शियस लेवल की साधना। जी। तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं। राइट जी महाराज। हाँ, माय थर्ड क्वेश्चन 272 लास्ट फिफ्थ लाइन है, महाराज जी जप एंड ध्यान आर टू डिफरेंट पाथ टू रीच मुक्ति और जप लीड्स टू ध्यान। देखो, ये तुमने ऐसा है कि किताब में लिखा है कि जब गेट एस्टेब्लिश्ड इन जप, देखो ये है दो प्रकार के स्टेटमेंट हैं, दोनों ठीक हैं। हाँ। एक तो है जप लीड्स टू मेडिटेशन। यस। जब एकाग्र करके जप करेंगे तो लीड्स टू मेडिटेशन। हाँ। लेकिन कंटिन्यूअसली जप करते करते अजपा जप होने लग गया, अपने आप भी होता रहता है, निरंतर होता रहता है, ये है जप अपने आप में परफेक्ट हो जाता है। यानी कोई व्यक्ति है जप में परफेक्ट हो जाता है, अपने आप जप करता रहता है, निरंतर जप होता रहता है उसका। तो ये भी होता है, इसमें किताब में भी लिखा हुआ है। और दूसरा ये है कि आप जब से मेडिटेशन में, इट लीड्स टू मेडिटेशन, दोनों हो सकता है। मोर इम्पोर्टेंट है जब कंसंट्रेट करके करो तो वो मेडिटेशन में चले जाए। चौथा सवाल का कोई मतलब नहीं है, भस्त्रिका प्राणायाम एंड दैट इज सब बाबा आपको समझ में नहीं आती। नहीं, वो छोड़ो। नंबर 5, महाराज जी विदाउट गुरु वन शुड नॉट डू साधना, कैन इट बी पॉसिबल थ्रू गूगल और यूट्यूब? गुरु क्या 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 विदाउट क्या बोला महाराज जी? विदाउट गुरु वन शुड नॉट डू साधना, ये लिखा हुआ है। नाउ माय क्वेश्चन इज, कैन इट बी पॉसिबल थ्रू गूगल और यूट्यूब? गुरु वे देखो, करके देख लो, मजा नहीं आएगा, करके देख लो। ये आजकल के जमाने में तो गूगल में कई प्रकार के कोई गुरु हैं, तो गुरु चलता ही रहता है, मजा नहीं आएगा, करके देख लो। अरे आर्टिफिशियल फूल में और जो ओरिजिनल फ्लावर वो उसमें है, वो मजा नहीं आएगा। अरे ये भी तो, ये सुनो सुनो, हाँ। ये भी हम लोग तो गूगल से ही तो कर रहे हैं। वही तो we get that lot of satisfaction. It's the energy for the week. चलो चेक क्यों नहीं होता? अरे पहले जमाने में तो गुरु से दीक्षा हो गई, उसके बाद में मिलने जाना करता था, यतीश्वरानंद जी से मिलने के लिए बैंगलोर जाना पड़ता था, बाकी उससे मुलाकात नहीं होती थी। जी। अब तो आप इन्हें किसी अपने गुरु से जो भी हो उनके मोबाइल फोन से बात कर लीजिए, जी, आराम से बात हो जाती है। जी। हाँ, ये बहुत बड़ी एडवांटेज हो गया, ये तो सोचो। जी। राइट, so it is possible. Okay, Maharaj ji, now my next question, paragraph 277, page 222. Maharaj ji, the third puja is worship of the Guru. How to worship Guru? We can worship physically, financially, and yes. वो तो उनके शरीर क्या है, गुरु के पास जाके उनकी सेवा करना, उनके कपड़े धो देना, जी, धन प्रणामी दे देना, रोग हुआ तो दवाई दे देना, आवश्यकता हो तो पूर्ति करना, यही है गुरु पूजा। यही जी महाराज जी। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ 279, लास्ट 3 लाइन। महाराज जी, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ अनुभूतियां, आर दीज अनुभूतियां गुड फॉर वी साधक? At one place it is said, as soon as you experience anubhutiya, you should stop meditation, as Swami Vivekananda said. अरे अभी हुई तो नहीं है, पहले होने तो दो, फिर देखा जाएगा। सारे जीवन कहते हैं कि सावधान रहना, सावधान रहना, कुछ होता नहीं।
अरे एक आध अनुभूति होए तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अनुभूति होने पर थोड़ा कुछ दिनों के लिए 7 दिन रियल वास्तविक अनुभूति होने से 5-7 दिन उस साधना बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि उसका है कि सिद्धि हो जाती है। सिद्धियां प्राप्त होने पर वो आपको नुकसान कर सकती है। तो सिद्धि अगर हुई तो उसको बंद कर दो, तो उसके बाद उस दिशा में मन नहीं जाएगा। वो बहिर्मुखी मन हो जाने की संभावना होती है, इसलिए उसको मना करते हैं। लेकिन जैसा भी गुरु कहें, उस गुरु को बता, यानी वो उसको जो है वो गुरु को बता देना चाहिए कि ये हुआ। अगर गुरु नहीं हो तो कोई सिद्ध अच्छे साधक हो, उनसे डिस्कस कर लेना चाहिए कि भाई ये मुझे अनुभूति हुई है, क्या करूं। राइट। पर ऐसा है कि ये थियोरेटिकल, इसलिए मैंने कहा ना, होए तो तब देखा। जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराग्राफ 281। महाराज जी, only those among them which find favorable circumstances manifest themselves and become active. What is the meaning of favorable circumstances? यदि आप महाराज जी एक मिनट महाराज जी, मैं हिंदी में इसकी 4 लाइन पढ़ना चाहता था। इनके बिना कार्य नहीं होता। हमारी जो कुछ भी अच्छी या बुरी रुचि या प्रवृत्ति आदि है, सब ही पूर्व संचित संस्कारों की उत्तेजना मात्र है। उनमें से वे ही प्रकाशित या कार्यक्षम होते हैं जिनको अनुकूल वातावरण और परिस्थितियां प्राप्त होती है। दूसरे संस्कार संचित बने रहते हैं, उपयुक्त योगायोग की प्रतीक्षा करते हैं और अवसर पाकर शुभाशुभ फल प्रसव करते हैं। हम कुछ भी तो क्यों न करें, सभी सत और असत से मिश्रित रहता है, इसलिए सुख दुख मिश्रित फल भोगना पड़ता है। जिससे जिसका परिणाम ज्यादा होता है उसको वही नाम दे देते हैं। ये देखो ऐसा है कि आप रहो, तुम्हारे अच्छे संस्कार भी हैं, बुरे संस्कार भी हैं। हाँ। अब आश्रम में जाकर रहो तो उसमें अच्छे बुरे संस्कार निकलने का अवसर तो नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं मिलेगा, परिस्थितियां नहीं है। बस ये कितना इम्पोर्टेंट है। जी जी, बस ये सीधी बात है। बिल्कुल ये है कि जो अच्छी चीजें हैं वो मैनिफेस्ट होंगी, बुरी नहीं मैनिफेस्ट होंगी। तो महाराज जी, ये जो बुरे संस्कार या बुरी चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली वाइप आउट हो जाएगी विदाउट एनी? नहीं, जब वो ऐसा है कि उसी तरफ चलने दो। क्या है कि वो मौका मिलने पर क्या है, जब बहुत अच्छे शुभ संस्कार जब हमारे बहुत सारे बन जाते हैं, तो अशुभ संस्कार जो है वो बहुत क्षीण हो जाते हैं, उनका पावर एकदम कम हो जाता है। वो मौका मिलने पर थोड़ा सा मैनिफेस्ट होके बर्बाद हो जाता है। ओके, विचार के द्वारा उसको हम नष्ट कर सकते। बराबर जी महाराज, बहुत अच्छा। जी महाराज, मेरा नेक्स्ट सवाल है पैराग्राफ 285। Consciously he has to plunge into meditation on his own real essence, the self, rejecting all external objects. On what object the sadhak should meditate? Is it darkness, empty or hollow? ये ज्ञान मार्गी का है। ज्ञान मार्गी जो लोग है ना, उसको चैतन्य के प्रकाश पर मेडिटेट ऑन ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस, सर्वव्यापी चैतन्य का प्रचार करो। जैसे आकाश है, आकाश का ध्यान करो। लेकिन ये आकाश जो है ये जड़ आकाश नहीं, ऐसा समझो कि ये आकाश जो है ये परमात्मा है। परमात्मा सर्वव्यापी परमात्मा का चैतन्य है आकाश। अच्छा, ऐसा ध्यान। या फिर प्रकाश का ध्यान करो, सर्वव्यापी प्रकाश है। हाँ, ये ध्यान हो गया ज्ञान योगी का। आकाश का ध्यान प्लस चैतन्य, उसके साथ फिजिकल चैतन्य क्या, उसको चैतन्य करो कि ये मानो यहाँ पे कोई है, सत्ता है। कौन से सत्य है? आकाश, सारे तरफ आकाश है और सारे तरफ प्रकाश है, ये परमात्मा का प्रकाश है। सत्य। Can I just ask something related here? बोलो। But meditating and imagining that there is light is more difficult than meditating on Thakur. No, here the question is different. He is talking in terms of Gyan Marg. Okay. तो महाराज जी, ये हमें आकाश का हमने ध्यान किया या प्रकाश का ध्यान किया तो उस समय चैतन्य बुद्धि रहना आवश्यक है कि ये ईश्वर है? अच्छा रहना अच्छा है, क्योंकि प्रकाश में क्या फायदा हुआ?
हाँ, वही मेरा सवाल था कि डार्कनेस एम्प्टी या हॉलो से क्या मतलब क्या रहेगा? हाँ। तो डार्कनेस और हॉलो नहीं, आकाश तो हॉलो ही हो गया ना। हाँ, वही मेरा सवाल। नहीं तो उसमें इसीलिए तो चैतन्य का प्रकाश है वो, ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस, सर्वव्यापी चैतन्य का ध्यान। जी, राइट महाराज जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 286 पैराग्राफ, भक्ति टू बी द बेस्ट suited to this Kali Yuga, the iron age, the age of sin and degradation. Maharaj ji, how a God creation be so bad or cruel, as it is said, the iron age, the age of sin and degradation. तो यहाँ पे इस आर्टिकल में कहीं लिखा हुआ है कि ये क्रिएशन जो है भगवान की है, तुमने लगा दिया, तुम लगा रहे हो आर्टिकल में। यहाँ तो लिखा नहीं है कि भगवान ने क्रिएट किया है। तुम क्यों लगा रहे हो? भगवान को क्यों ला रहे हो बीच में? महाराज जी नहीं, ये मैं जो सेंटेंस है वो ये है, भक्ति द बेस्ट सुटेड टू दिस कलियुग, द आयरन एज, द एज ऑफ सिन एंड डिग्रेडेशन, ये तीनों चीज उन्होंने बताई। हाँ, तो एज जो है ये एज ऑफ डिग्रेडेशन है। हाँ, एज की डिग्रेडेशन है, लेकिन ये एज भगवान ने किया, ये कहाँ लिखा है? भगवान को बेचारा क्यों ला रहे हो यहाँ पे? महाराज जी ये पैराग्राफ में नहीं, पर भक्ति टू बी द बेस्ट सुटेड इन कलियुग, तो महाराज जी कलियुग में कलियुग जो है, ये कलियुग जो है ये शैतान ने बनाया, भगवान ने नहीं बनाया। ओके, भगवान को क्यों ला रहे हो? अच्छा, तो भगवान को और शैतान को लाने की जरूरत नहीं है, सीधी बताया है कि कलियुग ऐसा है। अच्छा, अब बेचारे भगवान को और शैतान को दोनों को खींचते हो वहां पे? नहीं। अच्छा महाराज जी, माय लास्ट क्वेश्चन, see Ramakrishna has given this new idea of universal religion to the world after having practiced it himself. It is the Yug Dharma, the religion of this age. Maharaj ji, a new religion has grown or taken birth and will be recognized universally after 500 years or so. Am I correct? अब ये तुम जानो बाबा, 500 या 1000 के बाद होगा या 5000 साल के बाद होगा, तुम जानो। नहीं, जैसे ये वैष्णव महाराज जी, एक मिनट, मेरा सवाल छोटा ये था जानने के लिए कि जैसे वैष्णव धर्म है, जैन धर्म है, बुद्ध धर्म है, तो वैसे इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए युग धर्म। अब ईसाई धर्म तो 2000 हुआ। हाँ, अब ये पता नहीं बाबा, अब हम नहीं जानते। अच्छा जी, बस अच्छा हो गया जी। अब कोई है और कोई है कि नहीं है? और कोई क्या ये बोल पूछो ना, ये तो पूछा ही नहीं इसने तो। हाँ बोलो, पूछो। स्वामी जी, पहला क्वेश्चन है that if like Sri Aurobindo used to say that some asuric forces can assume the form of your Ishta. Now, how do I know whether what a vision I get or any experience vision I get is it a real? It is really Thakur, or it is some asura taking the form of that form? It's very scary. External vision to see with open eyes. You see, Sri Ramakrishna never told that asuric forces will become your Ishta. It will never happen. It will never happen. But yeah, you are asking a question that asuric someone else has told that asuric forces will become your Ishta. Yeah, they can take the form of your Ishta. I got scared. But Sri Ramakrishna never told that. Fine. Then it's all wrong. Swamiji, the second question is, now you're going to get annoyed when I'm going to ask you. Please share your experience to inspire us. How did you develop Sankalpa Shakti and also Vak Share? Because really we are, at least I'm at the low end of the ladder here. So I want to learn, how do I increase my, develop Sankalpa. I don't understand what you are talking. No,
you know, like you see, your sankalpas you have to develop is Dirgha Kala Nirantarya Satkara Soivadyo Dridbhumi. Patanjali Yoga Sutra is said that way abhyas has to be done for a long time. Every day you have to do, and with satkar, with dedication. This is how your sankalp shakti develops. Okay? Yes, Swami जी. Okay. ठीक है, सब हो गया? नहीं स्वामी जी 4 questions हैं. Third, you know, this is with reference to 290 page number, this 298. This Srimad Bhagavad Gita, Bhagavatam, Bhagavad has given that. I'll ask the question basically. It's talked about Srimad Bhagavata Adhar. Now you are not clear about it? No, I'm clear. I'm clear. No, you are not able to articulate your question. No, I'm asking you that if I experience fear, can I come to a conclusion that I have violated dharma in some way, or I've spoken an untruth? Otherwise, I should be in bliss. Is my question here? No, not clear. The sentence is not clear. What is it? You are not able to listen. That whenever I experience any negative feeling or fear or anger or whatever, can I conclude that I have violated dharma or I have veered to untruth in some way? That's the only way I can experience any negativity. You see, don't, Swami Vivekananda, if you have not read Swami Vivekananda, Swami Vivekananda never bothered about anything negative. No negative. Whatever, hundreds of negative things will come. You don't bother about it. You go on practicing what is positive. The matter ends there. Thank you. So, the third question, this is not related to here, but I was reading in Reminiscences of Swami Vivekananda one statement where Swamiji tells Alberta, that is Jojo's niece, Alberta, no fact in life will ever equal your imagination of it. Can you please explain this, Swami? Yeah, you see, your mic which is there, which is not clear. It's not That clear. is the point. Okay, can you hear me better now? Yes. Okay. This question is not related to the text. It is taken, I was reading this Reminiscences of Swami Vivekananda, and Swamiji's statement to Alberta, that is Jojo's niece, he says, Alberta, no fact in life will ever equal your imagination of it. Can you please explain this? I just don't understand it. The imaginations are always stronger. Oh. That is the thing. Imaginations all goes beyond even fact. That is the only thing Swamiji wants to say. That's all. Okay, thank you so much. Acha, no, but next time if you have to send the questions, it is not being after the class. You have to send it before. Everyone send the class questions before. Swamiji, I sent it before. No, I didn't get it. I've sent it on email long back. I sent it on your. I sent it on email. I sent it on your mobile. 2 places I sent it. Anyway, next time you will send and then okay. And let me see, because I didn't get it. That's why the thing. Oh, I'm so. Okay. Okay. ठीक है. बंद करें. ये महाराज. ओम शांति. हरि ओम नमस्तु. तो क्लास तो अच्छी हुई आज. मीटिंग अच्छी हुई.